अंजाना अंजानी की शूटिंग उधर हुई थी. It's huge. There is a line to take photo with this sign. पूर्णिमा अभी फुल जुआरी बनने के सीन में $5 बेट करिएगा. इस $5. Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. Welcome back to another episode of Travel with Sar, where you and we travel together. We are in Vegas, baby! Oh my god, girls trip to Vegas. What a freaking dream. मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि हम यहाँ पहुँच गए. Like starting से like the अभी हम फ्लैशबैक में लेके जाते हैं ना उनको. Like let's take them. हम न्यूयॉर्क से आए हैं लास वेगस. So let me take you in a rewind mode. Wow, creativity. काफी फैंसी शुरुआत कर रहे हैं हम इन लास वेगस. लेट्स गो. किधर है देख, लोकेशन देख. तेरी बहन क्या क्या बुकिंग करती है. बराबर विनीशन के बाजू में होटल लिया. दिस इज सो फैंसी. अपन मंडे ट्यूसडे आए ना, इसलिए सस्ती पड़ी अपने को. वीकेंड पे बहुत फट्टे महंगा होता था. This is a little too fancy now. Now I can't process that we got this for so cheap. Bro, there's a walk-in closet. Are you kidding? What's happening? इतना अच्छा नहीं दिख रहा था ऑनलाइन. रूम की साइज देख ब्रो. Vegas luck is hitting us already. This is a freaking massive hotel room. Massive. And we've got a room. भाई हम कितने लोगों को रख सकते हैं इधर. I thought the room would be bad because the hotel is. And we've got a sphere view. Oh my god. This opens as well. Yeah. Bro, look at the view. ये कोई अलग ही किस्मत खुली है हमारी इधर आके. Venetian literally हमारे सामने. ये कांच गंदी है but that's the Venetian hotel which is super popular. अंजाना अंजानी की शूटिंग उधर हुई थी. That's the Sphere, which is also super popular. The Las Vegas Strip is right in front of us, bro. We are on it. Yeah, we are on it. This is the Strip. This is Paris. Oh, they have In-N-Out also here. I want to try In-N-Out. Oh भाई, bathroom. बहुत अच्छा bathroom है. कितनी ज़्यादा space है. I am still not like I belong here. मेरी selection हो गई है. The thing is, of course, we were looking for budget stays, which is as close as possible to the strip. So this is not that expensive. हमको पड़ी है overall 3 रात 4 दिन की like 30,000 with the upgrade. We got an upgrade of this view अभी नीचे. But online हम लोगों ने 23,000 भरा था. अभी 7,000 एक्स्ट्रा भर के हमको ये व्यू मिला है. But that means that we booked this one. It's damn cheap, you guys, because the location is right at the Las Vegas Strip. And जब हम book कर रहे थे, we were trying to see as close as possible कि जितना like we should be as close as possible ताकि टैक्सी नहीं करना पड़े और चल के हम सारे hotels चले जाए. Vegas is all about like just going from casino to casino and hotel to hotel and bar to bar and यही करना है मतलब पूरा. तो you know if you're staying at the Strip, it's convenient और हम टैक्सीज में पैसा नहीं वेस्ट करेंगे. इसीलिए हमने Strip पे होटल की. इससे पहले वी हैड डन अनदर होटल. आई एम सो ग्लैड. एंड एक तो रिव्यूज बहुत अच्छे थे कि द रूम्स आर रियली बिग ऑफ दिस होटल. सो आई सॉ दैट कमिंग बट आई डिडंट सी द लोकेशन बीइंग सो फ्रिकन गुड. आई मीन अब हिट हो रहा है आपको. पूर्णिमा को तो याद भी नहीं था कौन सी होटल की थी. शी इज लाइक तूने कितना पैसा भरा है लॉबी में. शी इज लाइक कितना भरी है सच्ची सच्ची बता. शी थॉट मैंने कुछ ज्यादा ही पैसा भर के उसको इधर लेके आई हूँ, व्हिच आई एम वेरी केपेबल ऑफ डूइंग. सो शी वाज लाइक सच्ची बोल कितना दिया है, सच्ची बोल कितना दिया है. This is amazing. We're in Vegas, baby. I can't believe it, bro. Seriously.
Bro, मैंने entrance से क्या था? अभी मैं right यार मेरे को भी लगा हम गलत बिल्डिंग में. End of flashback. विश्वास ही नहीं हो रहा था जब मैंने वो वैसा स्वेट पैंट में ऐसा रगड़ के अपना लगे लेके आ रही हूँ. मुझे कोई सब 3-star होटल होगा. अभी But- लॉबी देखा हम लोग ने and it was- Yes, we are part of the Caesars hotel group. I cannot believe that this is actually happening. Like हम लोग दोनों लैंड होते समय also we were like हम like कहाँ मतलब मम्मी 11 बजे फोन करके पूछती कहाँ हो घर पे नहीं है. Now उनके रात के 12 बज के सो गए मम्मी और हम दुनिया के दूसरे कोने में like let's go. We are very hungry. तो अभी हम लोगों ने like base makeup वगैरह नहीं किया है. We've just thrown on our tops and jeans. And we're gonna go and see what is there to eat. आप लोगों को दूसरी चीजें भी देखने मिलेगी guys because कल हम जा रहे हैं Grand Canyon tour which is booked on Head Out. I am so excited for that also because that was a major reason. I was like वो लाल लाल पत्थर किधर देखते हैं US में, वो लाल पत्थर मेरे को देखना है and that was my main reason. I saw that on Head Out कि यहाँ से Vegas से there's a day trip that will take you to Grand Canyon and I was like okay that area I really want to go. It's definitely a bucket list item for me. So tomorrow we'll be going to Grand Canyon via like a day trip जो हम लोग को यहीं से pick up होगा and then it'll take us in a bus. याद है मम्मी लोग के साथ मैं स्विट्जरलैंड में जैसा गई थी वैसी सेम टू सेम वैसा ही होगा एक्सपीरियंस कि यहाँ से बस हमको पिकअप करेगी ग्रैंड कैनियन लेके जाएगी वहां पे वी हैव टू डू ट्रेकिंग एंड सी दोस एंटीलोप्स एंड एवरीथिंग एंड इट्स रियली स्टनिंग. आई हैव सीन सो मेनी पीपल्स फोटोज ओवर देयर एंड जस्ट थॉट के वाओ मैं कभी जा भी पाऊंगी ऐसा एक्सेसिबल जगह है भी कि नहीं. बट इट इज डेफिनेटली एक्सेसिबल मेड वेरी एक्सेसिबल बाय हेड आउट. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. अगर आप लोग कभी भी वेगस आओ डेफिनेटली एड वेगस टू योर ट्रिप इवन इफ यू आर अ ट्रेकर और जस्ट एंजॉय नेचर बिकॉज देयर इज अ लॉट टू डू ओवर हियर. लाइक सागर भैया वाज आल्सो टेलिंग अस दैट्स पूर्णिमा's brother. He was telling us there is Death Valley and that's very beautiful. It's one of the most beautiful things he's seen in Vegas. Vegas is about the party but Nevada has like it's basically a huge desert, like huge desert. हम लोग फ्लाइट से देख रहे थे कि खाली रेती 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 दिख रही है हर जगह. तो नेचर भी इधर बहुत है. It's not just about हो पार्टी करना है. बट अभी हम जाके खाते हैं फिर we'll explore all the different avenues there is in Nevada to do. Okay, let's go. I'm तो going hands free, bag free, just my camera. You guys are coming with me and मेरा cards है मेरे पास. चाबी लिया, वो दूसरा। रूम का चाबी नहीं है मेरे पास. Caesars Palace bro. I believe it's cold. It is very cold. इतना सेक्सी तैयार होके आए हैं और फिर इतनी ठंडी ठंडी लग रही है. जाना है रूम पे कि बर्दाश्त करना है. यहीं पे होटल के नीचे देयर इज अ प्लेस दैट वी कैन ईट. You know, two of my favorite movies, Hangover and Anjana Anjani, are shot in Vegas. So I'm so excited to explore Vegas. Like I'm seeing Venetian from our hotel room, and Anjana Anjani का that song I Feel Good was shot there. So मुझे ऐसा विश्वास ही नहीं हो रहा है कि I'm there. Like Anjana Anjani is my favorite रणबीर कपूर movie. और मजा आ रहा है. Locked everything. Yeah, the way Vegas is connected is so cool through these bridges, very beautiful bridges. So you just go up, and then keep coming down. Like हम ऊपर Caesars Palace के उधर गए, अंदर नहीं गए अभी तक. And then there you can see Bellagio and all. They have closed it for the F1 thing. Like they're constructing all this right now. हाँ, F1 हो रहा है. Everything is closed. Yeah. तो इसीलिए हम लोग को ये सब करना पड़ रहा है. But मजा आ रहा है Correct. मुझे. मुझे तो बहुत मजा आ रहा है. हमारा कुछ एजेंडा थोड़ा है. बस चलो और आईफिल टावर भी दिख जाता है इधर. ब्रो तू ऐसी होटल में लाके मेरे को ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकती मेरे पे. और तू यहीं से चलवा रही है मेरे को. ये सेल्फ कंट्रोल करना. अगर आपको इस जीवन में सफलता लानी है तो खुद पे सेल्फ कंट्रोल नामक चीज करनी है. समझा आपको? नहीं समझी. आप मेडिटेशन ट्राई कीजिए. अच्छा आपका ओके. चक्रास है ना वो थोड़े अलाइन हो जाएंगे और आप इस मटेरियलिस्टिक थिंग को चाहिए. This is Bellagio and it's luxury at its finest. Like all luxury brands are here. So beautiful. I love the interiors of the place are so vintage. इसी झूमर के नीचे मिलेगी शांति की लाश.
few moments later. All glammed up for a night out in Vegas. This is the dress I'm wearing. It's from Alamod by Akanksha. I love how it just hugs my curves so nicely. बाहर एकदम ही मस्त vibe हो गया हर जगह. It's lit up so beautifully and I saw all the colors change in the evening. I was recording but I was also sleepy. Like when sunset होते हुए देखा, I saw the Vegas strip just light up and then I went off to sleep for 2 hours. Both of us have taken a nice like a siesta and अभी हम उठे हैं, तैयार हो गए हैं. पहले हम खाना खाने जाने वाले हैं बाहर, उसके बाद we'll see what to do. Now we have discovered the reason why our hotel is so inexpensive for being such a fancy hotel, because जितना भी clubbing scene है ना वेगस का, that lights up only on the weekend. So Thursday, Friday, Saturday, Sunday is when they really have the good clubs open. There's no club open before 10:30 p.m. and कल सुबह हमको Grand Canyon के लिए जल्दी उठ के जल्दी निकलना पड़ेगा. So we were going to pass out a little early. We'll have a good dinner outside and also check out the Bellagio's fountain, which is super famous. So every 1 hour, it's at the top of the hour or what, for 15 minutes? No. Every hour is 15 minutes. Like. हाँ, top of the hour, 8 to 8:15, 9 to 9:15. I'm not sure because here it says sometimes it's like it depends on the day. Today's Tuesday, right? That's the plan. तो चलो चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या क्या है और कैसा माहौल है बाहर अभी रात के टाइम पे. We've come to Bellagio to see the fountain. 11:15 हो रहा है, every 15 minutes. ये second last slot है. बहुत ठंडी है, बहुत ही ठंडी है. We are going to Caesar's Palace. This is where Hangover was shot. This is where Friends was shot. I'm so excited. Are you ready? Dialogue मारने ready है कि नहीं? I already see the face like the interiors are not like obviously. Bellagio. Yeah. Day 2. Good morning. We are going for the canyon tour. ये हमारी बस है जो हमको पिकअप कर रही है. हमारे होटल से छोड़ के हमको नेक्स्ट होटल से पिकअप कर रही है. We are doing the most Indian thing and eating chakli on a bus. Tour to Lower Antelope. No, Upper Antelope. That's where we are going. We are in Utah now. Utah city enter हो चुका है. सब सेम ही दिख रहा है अभी के लिए because this is the it's a big desert. It's a big desert. पूर्णिमा बोलती है विदर्भ के जैसा लग रहा है. The landscape looks like Maharashtra, very much like Maharashtra, but there is a similarity. It's red sandstone. Because I'm from Maharashtra, doesn't mean like Maharashtra represent, but yeah. It is very similar, but मैं भी देख के वही बोल रही थी. मम्मी का घर भेजो अरे सह्याद्री माउंटेन रेंजेस दिख गया. मैं और पूर्णिमा ना स्कूल के केरला ट्रिप पे गए थे ऐसी बस में बैठ के. अभी पूर्णिमा hated me in school. See, now we are in Arizona together. Did you think? सात समुंदर पार. You should dance that on this song. Literally, like now I'm Canada के फिर We are now in Colorado City. यहाँ पर हम लोग ने पिट स्टॉप लिया है. कॉफी ब्रेक है 15 minutes. We are crossing quite a lot of cities to go and reach Arizona for the Grand Canyon. यहाँ पर हम लोग ने एक 15 मिनट का स्टॉप लिया. काफ़ी टाइम सेंसिटिव टूर है. लाइक अगर आप थोड़ा भी लेट हो गए तो वो छोड़ के चले जाएंगे. लिटरली आज सुबह हम लोग को छोड़ के चले गए फ्रॉम द होटल. द मीटअप वाज एक्चुअली 5:30 and we came down at 5:15 but he left at 5:10 only and he was like no next hotel का 5:30 है.
अरे हमको कौन बताएगा भाई, बट या इट्स अ वेरी टाइम सेंसिटिव टूर बिकॉज इट्स वेरी फार फ्रॉम लास वेगस. यू आर क्रॉसिंग यूटा, देन नाउ वी आर इन कोलोराडो सिटी, एंड आई ऑनेस्टली डोंट नो द ज्योग्राफी ऑफ अमेरिका दैट वेल, सो आई डोंट नो ये कितना दूर है, बट काफ़ी दूर है. एरिजोना तो काफ़ी दूर है. हम निकले हैं सुबह के 5:30 बजे, अभी बज रहे 9 और अभी भी 1.5 घंटे का सफ़र है टू रीच एरिजोना. एरिजोना पहुंचने के बाद वी विल बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्रैंड कैनियन. So we have taken the upper antelope tour. There's a lower antelope and a canyon X. I'm just seeing अगर कुछ है इधर जो ले सकते हैं if we feel like eating. I'm just gonna pick up one hot Cheetos in case we feel hungry later. हमारे पास चकली थी बैग में तो वो तो हम खा गए आधा. Purnima has my card. She's grabbing coffee. Now it's 20 degrees, so it's not cold, so I have not taken my jacket out. This is the Glen Canyon. I'm looking at you. I'm trying to get your attention. Can I come close? I don't know how to play. Alright, this is another pit stop. This is at the Glen Canyon, and this is the Colorado River. Really beautiful. अभी अच्छी धूप भी है, so you don't have to wear jackets and layer up. I'm already wearing a thermal inside though, so I'm sorted. This one is wearing a jacket. So she's also sorted. Yeah, because I'm repeating my outfit, so that's why I wanted to. Perfect. I'm तो wearing Purnima's outfit. I'm like, I'm done with. क्यों नहीं बताने का? That's how they should. Like, I have not carried enough. They saw the packing vlog. Not carried enough, but still broke a suitcase. A few minutes later. Okay, after literally half a day, अभी 1 बज रहे. Finally, we are going to the Antelope Canyon. Yes. Let's go. फाइनली हम पहुंच गए हैं ग्रैंड कैनियन और अभी ये जीप हमको लेके जाएगी अपर एंटेलोप पे. मेरा जैकेट भी मैंने हाथ में लिया. अभी तो धूप है बट अंदर ठंडी हो सकती है. During our afternoon tour, I'll provide you with some background on the canyon. Feel free to ask any questions. Please don't hesitate. I'm happy to answer any questions as we go along. Okay. So from here to the entrance of the canyon is going to be a good 15-minute drive. The canyon is 3 miles from here. The ride's bouncy, it's rough, and it's dusty. Please make sure everything in the pockets nice and secured, especially the phones and the keys. Those fall out a lot. Okay. When we get to the canyon, we'll be inside for a while. Once we're done and we exit the canyon, we're gonna hike up a big old hill, walk along the top of the canyon, and then hike down another hill before we get back to truck number 5. But while we're inside the canyon, we're gonna stick together as a group. It is a walking tour, so we'll be constantly moving together inside the canyon as a group. I'll stop and show you some nice spots, take a good photo, where to stand, where to get the good light that comes in from the top. If you like, I could do some group photos. Looks like we got 3 groups here today. Yes. Okay. So once we get our group photos in, we're going to continue to move forward so the next groups behind us can come up and do the same thing. All right. Yeah. All right. So any questions at this time? ज़्यादा उस वॉलपेपर्स जो हमारे टीवी और लैपटॉप पे होता है, फाइनली हम उसके अंदर जा रहे हैं. अभी हमारी भी फोटो होगी वो वॉलपेपर के साथ. I'm gonna remove my sunglasses and see the actual colors. I did that. This was one piece of rock. This was all connected until the forces of flash floods started to take advantages of cracks and fissures in the bedrock. And that flow of water over stone slowly started carving its way deeper and deeper into the landscape, forming this slot canyon we're walking through today. I'm in awe of how beautiful nature is. Okay. Thank you so much. बहुत ही खूबसूरत है. मतलब I can't believe, मतलब खाली फ्लड्स आने से इतना खूबसूरती अपने आप बन गया. मतलब क्या ही है. मजा आ गया. कुछ अलग ही देखा. आई नो विंडोज का वॉलपेपर रियल लाइफ. उधर आपको सीढ़ियाँ दिख रही है जो ये लोग उतर रहे हैं वहाँ पर. सो दैट मीन्स दिस एंटायर थिंग इज़ द कैनियन. हम इसके अंदर थे करंट. इसके अंदर की गुफा में थे हम. और अभी वी आर आउट एंड देन एग्जिटिंग फ्रॉम दो स्टेयरकेस. Crazy.
Like इतने बड़े desert में out of nowhere this is there. Like what else must be there in Arizona? No, because it's a big fat desert, right? It's just barren land everywhere. And this is also barren, but it's just nature's beauty. Thank you to head out for another amazing day in US. Like these out of the box experiences only happen because I check the head out app every time I'm booking and planning a trip. Like I was in Vegas, but now I'm in Arizona within one day, and now I'll be back in Vegas. So it's perfect, like making the most of your trip, you know. वरना फ्लाइट ही बीच की इतनी महंगी पड़ जावे, फिर स्टे कोई दूसरी सिटी में. Like if you if you want to do another state in US, you will of course do the flight in the state and stay and everything to experience just the Grand Canyon. But Vegas में रहो और Arizona आके देख लो, फिर वापस चले जाओ. Sorted. मज़ा आ गया मुझे. There's a little chipmunk there. Oh my god. How is he even? He's like color in my land. ऐसा थैंक यू के लिए एग्जिट पे बैठा है वो. आपने हमारे नाम को निकाल दिया. Yeah. Okay, last destination for this tour that we've booked is the Horseshoe Bend. It's just like a beautiful place. 20 मिनट चल के जाना है. टाइम करना है एक्चुअली, क्योंकि 1 घंटे में वापस भी आना है. 3:20 हो रहा है. Let's see how much time we take to walk. We didn't take पानी. अभी वापस नहीं जा रहे. वो बहुत दूर चल रहे हैं. गिर गए तो गिर गए. डिहाइड्रेशन. देखो ऐसा दिखता है अभी फोटो के बाद. इसके बाद आपको रियल दिखाऊंगी. ये डेजर्ट में ना मुझे से वो गाना सूझा, तू है तो है एक लम्हा खूबसूरत है. अंजना अंजना is my favorite movie. Okay, I've seen it over 10 times. I love that movie. Being in Vegas is like Vegas and New York दोनों. इसलिए मुझे आइस स्केटिंग करना था न्यूयॉर्क में. मैं लाऊंगी अपने अनजाने को. वो डैम, it's massive. Dude, it's massive. I know, I thought. There's an Amazon box. It's huge. I didn't think it would be this huge. हाँ. Crazy है ना वो. And देख पानी हिल ही नहीं रहा है. Yeah, because नहीं हिल रहा है. कुदरत का करिश्मा. I honestly thought ये बाली में जो मैंने ब्रोकन बीच देखा था वैसे ही होगा, छोटा सा, उसके अराउंड पानी है. But no, this is massive. Like Bali's is like a rock as compared to this mountain. It's huge. Very very big. Perspective wise ये 100x of the Bali broken beach है. Similar looking but different stone of course. And huge. कहाँ बैठना है आपको? इसकी फट रही है but फोटो भी लेनी है. आ रहा है क्या देख. पहले तो बैठ, फिर मेरे को मालूम पड़ेगा आ रहा है कि नहीं. हाँ, you can do it. Adios. मिलते हैं जल्द. जल्दी मिलेंगे. Stay free. Last day in Vegas.
Vegas and we are off to have some Vegas kind of fun today. आज बहुत packed itinerary हमारी. We are dressed right now to go to the Las Vegas sign. जो Welcome to Las Vegas का sign है. That's where we are going. I got this top from Forever 21 and I think it's so perfect. सुबह इसका bow भी pop off हो गया, so we've just put it with safety pin, which you can't really tell. Wearing these blue jeans and some dunks. I'm gonna be super comfortable even though I'm wearing really nice dresses आज. I'm going to keep it super comfortable with the footwear because we're going to do a lot of walking. So this full area is the Las Vegas Strip and this is super bougie and it has only luxury hotels like this Venetian, Palazzo, Bellagio, Caesars Palace. All this that we've heard and seen in movies is all here. So we've already been to Bellagio, Caesars Palace. We are thinking आज हम Venetian और Palazzo भी जाएंगे. We are going to the Las Vegas sign which is really far. इधर से it's like a 10-minute cab. So that's where we are going अभी नाश्ता करने के बाद. And then उसके बाद कहाँ जाएंगे हम फिर रात को Fremont district नहीं street yeah Fremont Street. So Fremont Street is the north side. That is where all the locals chill. So this is very like touristy. That's where you find the locals. That's where you get the vibe of Las Vegas. Aaj Thursday night hai, so it's early weekend. So we are hoping to catch a little bit of that vibe also. If you're coming to Las Vegas and you really are a party person, then I suggest you come like Saturday, Sunday, like Friday, Saturday, Sunday. Because inka weekend pe alag hi energy hota hai. Yesterday we were talking to the cab driver and he was telling us that Fremont is very different. And some people love Fremont, some people love the Strip. So till you don't go there, you won't know what vibe you enjoy better. तो आज हम वहाँ की vibe भी check करेंगे, वहीं पे dinner करेंगे. We'll spend the night there, and we also have booked the Magic Mike show at 7:30 p.m. That is the ticket I got via Head Out. So whatever I saw on Head Out, I booked it. जहाँ पे भी मैं जाती हूँ, wherever I see whatever is relevant to us, I book it. So Magic Mike show is a different show again. वो आज 7:30 बजे है. तो उसके बाद we'll go to Fremont. तो आज हमारा बहुत लंबा दिन है. Let's go. Uber is cheaper. It's really cheap in Las Vegas. इतना दूर भी जाने के लिए it's $10-12 only, which is good for America prices as compared to New York. New York में तो मैं बहुत ज़्यादा दे रही थी टैक्सी के लिए. New York में तो भाई नहीं लेना था टैक्सी, इसलिए हमने सूटकेस पूरा लग करके गए थे एक स्टेशन तक और मेरे हाथ में लिटरली ब्लड क्लॉट्स हो गए. आपको वो मैंने व्लॉग में नहीं दिखाया कि तब मैं व्लॉग नहीं कर रही थी. बट या New York taxis very expensive. Las Vegas much better because this sign, this Welcome to Las Vegas sign is all the way to the other side of where we are staying, to the Strip, and उधर और कुछ भी नहीं है करने के लिए. There's just that sign. People stand in queue to take a photo with the sign. That's it, and we are going to be one of those people now. But was obsessed with how these, like, this is the first time she's seeing a casino, so she's so mesmerized with the, like, it's very cool, right? I can't vlog inside the casino. It's not nice to vlog because they are playing and unke secrets reveal ho jayenge. But yeah, the casinos are damn cool to look at, and just like everybody's playing and everybody's so serious. And सुबह रात आप roulette machine पे लोगों को देखोगे. Yesterday हम लोग कितने 4:30 को निकले थे ना, 5 o'clock को. 4:30 or 5 o'clock, there was this one lady. She was continuously just playing, and मतलब उसके आँख में नींद भी नहीं थी. And I was like, bro, हम इतने नींद में. She was at it, doing whatever she was. I think like Americans who earn in the city, they just come to Vegas to multiply their money with gambling if they know how to, and then go back. हमको तो आता ही नहीं है तो. हम tutorials. हाँ हम YouTube पे tutorials. But हम सो गए फिर. देखने वाले हैं, जाएंगे आज देखेंगे. Yeah, we will. पैसा वेस्ट करने. I have actually seen casinos and played also with my family. But like my extended family was playing, तो मैं खाली बच्ची थी और मैं देख रही थी साइड से. I can be somebody's lady luck charm, like we can go become lady lucks, like go play. Let me give you like touch your Texas. Touch your Texas क्या? Dice मतलब बोलना. अच्छा. There is a line to take photo with this sign. इतनी लंबी लाइन है. साइड से एक्चुअली अपन भी ले ही सकते हैं लाइन में. पहले ये ले लेते हैं. Okay guys, we are here at the sign. हम लाइन में नहीं खड़े हुए, साइड में खड़े रह के हमने वीडियोस, फोटोज सब ले लिए और लाइन तो बढ़ती ही जा रही है. You can see the sign अच्छे से साइड में से also, so you don't really have to stand in queue. We got our shot, we got our content. अभी हम जा रहे हैं Palazzo. This sign is actually a historical place. It's from 1959. अभी तक मेरी फेवरेट बेलाजियो थी.
which is yours. Yeah. Village. Even the place that we're staying, Horseshoe, मुझे बहुत मजा हाँ, आया। horseshoe तो. The poker room is here. देखो poker room ही देख रहा है. Purnima is so fascinated with the poker rooms. उसको सिर्फ उधर ही रहना है. आता नहीं है but उधर ही रहना है. So good, bro. Like, मैं सीखना है। Yeah, okay. Learn and come and then we'll play. Tory work is here. We're hungry. अभी थोड़ा कुछ खाएंगे. फिर Jimmy Choo. पूर्णिमा मेरे को शॉपिंग करने देने नहीं वाली है. You know, my friends stop me the most. Like दुबई मॉल में तो मेरे पे हैंडकफ्स थे. एक साइड तमन्ना, दूसरी साइड पूर्णिमा. मेरे को कुछ नहीं लेने देते हैं लोग. जब हम फर्स्ट डे आए थे ये सारे ब्रिजेस खुले थे फ्रॉम होटल टू होटल. अभी सारों पे इन लोग ने ये डाल दिया है ताकि जब F1 रेस शुरू हो पीपल कैन जस्ट स्टैंड ऑन द ब्रिज एंड सी इट. अदरवाइज उनकी टिकट कौन खरीदेगा क्योंकि इधर से ही गाड़ी जाने वाली है F1 की. It's literally happening next week. Next week there'll be like F1 cars over here and then people can't see from here. They have to buy the stands car tickets, of course, if you want to, or stay in one of these fancy hotels. But they can see it from here also, no? They will block it, I'm sorry. They'll block everything, ना? उन लोग view ही block कर रहे हैं bridges पे से. The sidewalk and everything will be blocked. Yeah, good we didn't come during F1. We तो had no idea. तभी ये hotels के prices देखना कैसे बढ़ेंगे. Next week ही हो रहा है। हाँ. Treasure Island में we are going to a Mexican restaurant, Senor Frogs. Is it inside or बाहर? It's बाहर हाँ मतलब it's inside the hotel property. You have to go from here. Treasure Island में Cirque du Soleil show भी होता है. ये भी था head out पे ticket but I took Magic Mike instead. Google Maps ने धोखा दे दिया. ये तो इधर बंद है. इनके timings कुछ और ही है. हाँ ये होटल से कुछ गंदी बात आ रही है. बिल्कुल भी like ऐसा vibe नहीं हो रहा है जो वेगस का वाइब हो रहा था अभी तक. We can start a review channel on all the hotels we walked through. Finally Starbucks से एक कुकी ले लेते. नहीं, खाना है। I've taken an American honey, so it tastes like adrak shahad. But it's nice, it's tasty. Tasty adrak shahad. हाँ, hotel भी fine. Daytime drinking. That's what Vegas is for. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. चल फाइनली मैं बैठ चुकी हूँ पूर्णिमा. करना क्या बोलते थे? बेड हमने इस मशीन में $1 डाला और हमको 12 सेंट मिला. लॉस मेकिंग है ये. एकदम लॉस मेकिंग है. पूर्णिमा अभी फुल जुआरी बनने के सीन में. $5 बेट करिएगा. इस $5. मशीन इज वेरी हैप्पी. सिलेक्ट डिनोमिनेशन. बेट कर कितना ज्यादा क्रेडिट्स बेट कर. 240. $90 और $60 मिला. हाँ नहीं स्पिन कर. कुछ तो हुआ. Win 30. हाँ मिला. विन 30 हुआ. अरे अरे और दावा लग रहा है. समझा. $5 $6 खर्चा करके मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है. इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा. 72 cents. मैं बोली ना जुआ इज ओनली पैसा खाने का मशीन. हो गया ना. वेगस हो गया तेरा. अच्छा मैं भी जीजू इन लोगों के साथ खेली हूँ ना साउथ अफ्रीका में. मैं समझी हूँ कि आप खेलते रहोगे जब तक आप हारो और फिर फाइनली इतना हार जाओगे पैसा के वापस खेलने का पैसा ही नहीं बचेगा. तो व्हेन यू विन यू फील लाइक प्लेइंग मोर एंड देन यू विल कीप प्लेइंग एंड देन यू लूज इट ऑल. सो मेरे को तो कोई शौक ही नहीं है. सब जुआ देखने में अच्छा लगता है बट खर्चा करने में अच्छा नहीं लगता है. Yeah, you have to keep adding. That's the thing. You keep adding money. That's how these people lose their money. They were some $5 or $50. I can't afford $50, but I'm really tempted to try it. I don't know why.
Yeah, guys, don't gamble. It's not. गैम्बल करोगे तो डियोर बैग नहीं अफोर्ड कर पाओगे. वैसे भी मुझे नहीं मिल रही है. A few minutes later. Peach mango, I think. Peach mango. We are at Purple Zebra Daiquiri Bar. Today is all about the daytime drinking, guys. This is the glass we are taking. I love this holiday energy. You know the drama is never ending. Don't let it get the best of you. And all the fake friends just keep pretending. Passing one street and we are just grabbing one drink. This is something. पूर्णिमा बोल रही थी उसको वेगस हिट नहीं हो रहा है, तो आज मैं हिट करा रही हूँ उसको. Like एक दिन में वो फटाफट fast मतलब एक्सप्रेस वर्जन. केसरी. मैं वैसे ड्रेस अप ही हुई हूँ. This is a slushy with pina colada and mango smoothie. A few inches later. हमारी उबर नीचे रुकी हुई है. Purnima is already on her way down. I came back in the room to give you all an outfit check. This is a very glittery number I'm wearing from Alamod. It's so beautiful and it's very Vegas appropriate. coat पहन लिया because बहुत ठंडी होने वाली है. Let's go to Fremont Street. मुझे लगा तू नीचे जा रही है. चल ऊपर आ गई. The bag I'm taking. Blingy blingy. हम दोनों ने ऊपर से नीचे तैयार होके नीचे जूते पहने comfy वाले because we have to walk. It's a street, so who cares नीचे क्या पहने. And coat. ऐसे funny लग रहा ना हम लोग. सिर्फ ऊपर से we are looking like fancy. नीचे से we are like. नहीं मैं नीचे से लग रही हूँ. She's blinking from down, I'm blinking from up. हम दोनों का आधा जोड़ के एक outfit बनी. लगेज का मैं एक से बढ़ के एक होटल ही है ब्रो. इधर सब कुछ होटल के अंदर ही है. रूलेट का काम करके आती हूँ. तो Purnima is dressed like a dealer. Live your life within the moment. And don't go wait until the morning. You never know when it is over. All that I know is we'll get older. So let us dance this night away. Our bodies move to the groove and the light that flickers. We get lost in the crowd, it's getting thicker. We get away from the drinks and chatter. Haven't said a word, but it doesn't matter. Feel the air get thinner. Standing in a blurry dream. No one else can see us. Live your life within the moment. And don't go wait until the morning. We are at Fremont now after the Magic Mike experience. We are so happy. यही उसको आना था. यहाँ पे अंजना अंजनी का गाना शूट हुआ था guys. Ooh, vibe is different here. ऊपर लटक रहे थे ना लोग.
Got it all figured out, wanna do this right. There's A few inches later. Day 4. Alright guys, I'm gonna end the Vegas vlog right here. We're saying goodbye to Las Vegas. This is everything that happened in Vegas and it is here for you all to see. It's not staying in Vegas. Kal raat, it was fun. Everything over here becomes fun after 10 p.m. and I think it becomes even more fun on the weekends. 10 p.m. ke baad Fremont pe there were like live shows happening, so it was really like fun to just be around, you know, with the music and just flow. Like upar jo lights hai usme bhi music play hota hai. Segmentally niche live bands are also there, so it all becomes more lit after 10 p.m. and then we also went to Hakkasan, which becomes a proper club again after 10 p.m. over here. So like there was a DJ that came at 1 a.m. and then he was playing probably after that also. Hum 2:30 वापस आ गए hotel में. So it's a small city. I would say like taxis also not that expensive. You can go around simply, very easily. I really loved it. I definitely see myself coming back. It's a vibe overall and जैसा movies में दिखाया वैसे ही है. It's super fun. Vegas is definitely the definition of fun and I hope you guys enjoyed through this video as well. All the links to जो भी मैंने चीजें book की है is going to be in the description box, so you can check it out when you're planning your holiday. But is your Saraswat shout out goes to Arya Saraf. Thank you so much for watching and supporting my channel. If you want to be a part of next video Sarah's Squad shout out, you know what to do. Hit that subscribe button, bell icon right next to it, and also leave a comment down below saying hashtag Sarah Squad, so you get a chance to be a part of my next video Sarah Squad shout out. I will see you guys very soon in another video of Travel with Sarah from Los Angeles. See you next time. Bye. Mwah.